Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3 or unit number 3, that is called Energy and its Resources. And today I will deliver its second lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully, pause the video and then answer the questions. So my dear students, here you can see a boy. How do we move? The boy is running. So how does he move? He runs, he walks. With the help of energy. Very good. And where do we get the energy? From the food. Very good. So my dear students, everybody needs energy to move. So let's quickly do an activity before moving on toward the lecture. So my dear students, which type of energy is produced from these sources? आपको यहाँ पे कुछ sources नजर आ रहे हैं, पानी, windmill, इनसे किस तरह की energy produce होती है? This is the dam. This produces electrical energy. क्योंकि जब इसको pressure के साथ turbines के ऊपर गिराया जाता है, तो वो turbines बहुत तेज move करती हैं. So this falling water provides energy to the turbines, and those turbines change the energy into electrical energy. Similarly, when these windmills move with the help of wind, they also convert the energy of the wind into electrical energy. And what are different uses of electrical energy at your home? Name any 5. So, electrical energy के क्या-क्या uses हैं? आप अपने घर में किस-किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं? Quickly think and answer. हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पंखा चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, फ्रिज, एसी, टीवी, इन तमाम चीज़ों को हम इवन लाइट, जो बल्ब आपका जलता है, दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अनदर थिंग यू कैन सी, दिस इज सोलर एनर्जी. जो हीट होती है सन की, दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड दीज प्लेट्स. And this energy, heat energy, is turned into electrical energy. तो आप ये देखें कि एक form of energy को दूसरी form of energy में change कर दिया जाता है. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. So my dear students, in today's lesson we will discuss about energy. So let's quickly look at the Islamic perspective. Eat and drink, but waste not by excess. For Allah love not the wasters. So my dear students, हम खाना खाते हैं to get energy, पानी पीते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. इसी तरह हम डिफरेंट एनर्जीज को यूज़ करते हैं. हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. इन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सन. तो आज हम डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को रिकग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम सन को जो है वो डिस्कस करेंगे मेनली. So my dear students, some pre-reading questions. What are different sources of energy that you know? हमने अभी एक्टिविटी में different energy sources discuss किए हैं. जल्दी से जरा मुझे बताएं. Very good. Wind, water, sun, these are different sources of energy. Have you ever seen a solar panel? कभी आपने छतों के ऊपर बड़े-बड़े panels लगे हुए देखे हैं? They are the solar panels and they trap the heat of sun and then changes it to electricity. So my dear students, now is the time for reading. Quickly open page number 120 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Sources of energy. Where does energy come from? Just look at the above examples and try to find out the sources of energy in each picture. So my dear students, हमने previous lecture में different energy sources के बारे में पढ़ा था. Energy comes from different sources. Some of them are blessed by Allah Almighty and a few are man-made. Here we will discuss natural sources of energy which includes. So my dear students, energy के जो sources हैं वो different हैं. Some are man-made and some are natural, जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं. आज हम नेचुरल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे. द सन, वुड, फ्लोइंग वाटर, विंड, coal,
petroleum oil, and natural gas. These are all natural sources of energy. So my dear students, now quickly open page number 121. I hope everybody has opened the page. So my dear students, here you can see a picture. These are the solar panels. What will happen when the heat of energy and the light of energy falls on these panels? They trap the energy and convert it into electricity. And this is how the energy of the sun is used to generate electricity, जिसको आप घर में अपने इस्तेमाल करते हैं फिर. So now let's study the sun. Sun is the ultimate source of heat and light energy on the planet Earth. These energies produce food in plants. So my dear students, not just the sun produces electricity. सूरज जो है वो जमीन पर हीट और लाइट का वाहिद जरिया है, नेचुरल सोर्स जो है. और इसकी वजह से जो है प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं. हम जो है उन प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फीड ऑन दोज प्लांट्स, एंड दैट इज हाउ द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर. यानी कि प्लांट्स जो है सबसे पहले एनर्जी उन्होंने यूज की, उसके बाद बाय ईटिंग द प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग द एनर्जी. सो सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए. और इसको कैसे इसकी एनर्जी को यूज किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक. Humans utilize the energy of the sun after converting it into electricity that we use to run our appliances and equipments. It is the cheapest, clean and renewable form of energy. It can be generated until there is sun. So my dear students, सबसे सस्ती एनर्जी जो है वो सन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी को, हीट और लाइट एनर्जी को बिजली में या इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है, जिसको जो है हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट अप्लायंसेस को चलाने के लिए. सो सन की एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल है, क्योंकि तब जब तक सन है तब तक हमें ये एनर्जी मिलती रहेगी. तो सन जो है वो कब तक है, लेट्स हैव अ लुक. द सन हैज अबाउट 7 बिलियन to 8 बिलियन ईयर्स लेफ्ट बिफोर इट डाइज. सो सूरज के पास एक लंबी एज है और इसकी एनर्जी जो है ताकि हम इसको यूज करते रहे, एंड इट विल नॉट फिनिश till 7 to 8 billion years. So sun and wood, these water, windmill, coal, petroleum and gas, natural gas, these are natural sources of energy. So food energy comes from the sun. How? Because the plants make their food in the presence of sunlight, and human beings and animals utilize this food for energy. So living things के लिए sun की energy बहुत important हो गई. Next is electrical energy. So sun also produces electrical energy. How? When the sunlight falls on the solar panels, these solar panels convert the heat and light of the sun into electricity, and this is used in our homes. So इस तरीके से सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your roll number. Then start the worksheet. Find three objects around you and write where they get their energy from. So आपको कोई से 3 ऑब्जेक्ट्स जो है उनको, उनके नेम्स जो है वो आपको सोचने हैं. अपने इर्द गिर्द देखें, आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और फिर आपको बताना है कि ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है. जैसे कि टेलीविजन, इट गेट्स इट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. सो इसी तरीके से आप डिफरेंट जो है अप्लायंसेस के नेम यहाँ लिख सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि ये अपनी एनर्जी कहाँ से ले सकता है. आप अपने भाई का नाम भी लिख सकते हैं या बहन का नाम भी लिख सकते हैं. देन यू कैन टेल कि वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी from. They get their energy from food. Very good. So complete it, and this is the second part of the worksheet. Answer the following questions. Name of natural sources of energy. So we have just read about different natural sources of energy. Write down their names like wind, water, sun, natural gas, petroleum. These are all natural sources of energy. Question number 2. Which type of energies we get from sun? तो सन से हम कौन कौन सी एनर्जीज लेते हैं? हीट एंड लाइट. वेरी गुड.
So my dear students, quickly finish this worksheet and we will move forward. I hope you have finished it. Now we will move forward towards the evaluation. For evaluation, I will ask the questions from listening and speaking questions given on page number 126. I will ask question number 5 and 6. What do you understand by sources of energy? So the different sources of energy which help us to move different things, these are energy sources, or help us to make different things into working. These are energy sources. Name some of the sources of energy. Very good. Wind, water, petroleum, these are different sources of energy. So my dear students, for homework, you will do question number 2 on page number 128. What are the natural sources of energy? Make a list. So आपको natural sources of जो energy है जो we have just read about them, आपको उनकी एक list prepare करनी है and finish this in your notebooks. Okay. So this is your homework and now is the time for wrap up. So my dear students, in today's lecture, we have learned that different type of natural sources from where we get energy are sun, wood, flowing water, wind, coal, petroleum, oil, and natural gas. Sun is the biggest source of heat and light. We use heat of sun for electricity production and as food energy by plants. So my dear students, this is it. Today we have discussed about all the energy resources. We have made a list of them. And then we discussed about sun as the main energy source of heat and light. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.